I think we are live, but I'll still wait for another 10 seconds to see if I'm really coming live. So, this live is done today, as I kind of mentioned in the community, that we would be celebrating the holiday of yesterday, and therefore, let's skip. मैं एक बार देख लेता हूँ. Let's skip the live of which was yesterday and mention in the community. I think I can. Yeah, right. Good. Great stuff, guys. So, yeah, welcome and Happy New Year and Merry Christmas. And we will also discuss how our year went by. To our subscribers, I think the link of the YouTube video, which I did as a unlisted private video, was shared already. Of course, there are a lot of numbers in that, and therefore, not everything I can actually show on public page because it has percentage, right, in terms of the returns, and a lot of things are not right from a regulatory standpoint to kind of display. But they were real numbers, and therefore they are only meant for subscribers, right? If you're a subscriber, you anyhow access to the data, and therefore you can know the numbers. What I can talk about in a public forum is absolutely a multiple of the base index, so that it becomes easier for you to kind of match. And if you go to small case app, you can eventually find the video and of course can have a complete view. सो मैं फिर भी स्लाइड तो नहीं दिखाता हूँ आपको. मेनली मैंने बोला टीम को टू काइंड ऑफ शेयर द Q&A फॉर्म सो दैट वी कैन टेक द क्वेश्चंस. एंड संतोष बोल रहे हैं हेलो सर, इट इज़ गुड टू सी यू. राहुल सिंह ने कुछ मैसेज रिट्रैक्ट किया है, वो देखना पड़ेगा क्या है. आई थिंक राहुल का मुझे मैसेज भी आया था. राहुल, आई थिंक यू हैव सेंड अ मैसेज टू ऐड टू कम्युनिटी, सो आई थिंक द टीम इज ऑलरेडी ऑन इट इफ यू वर सेंडिंग दैट मैसेज. Hey, Dishi, I was timing was perfect. You also said that I have dropped a couple of emails as well. Yes, you will be added before I finish the Zoom meeting. So that's there. Okay, so कैसा रहा मार्केट, कैसा रहा 2024, क्या प्लान है 2025 का. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अराउंड डू वी नीड मोर बास्केट्स, डू वी नीड सम रीअलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटजी. मैं आपको एक आध टूल दिखाता हूँ, एक आध my own tools which will kind of show you the strength of the market, right? And मैं keep saying कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है. So I try to explain कि मार्केट की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है. हम क्या करेंगे, एक लास्ट 1 ईयर का डेटा देखेंगे 2024 का. देखेंगे कि आईटी ने कैसा किया, एफएमसीजी ने कैसा किया, ऑटो ने कैसा किया, मेटल्स ने कैसा किया. नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बिकॉज दैट परसेंटेज इज यूजली इज ऑफ पास. सो हम देख के हमें लगता है कि ठीक है इतना पैसा बना, हमारा नहीं बना तो देन वेयर इज द रियल फन. फोमो होता है. सो कॉफ़ी ले लूँ अपनी में. So, but I'll show you a tool, right, where we kind of assess the strength of the market. Now, S. Bhagat saying good afternoon, good afternoon. Khimesh saying hello, happy man, sir. Hello. Kodu Prabram family बोल रहे हैं hello. And questions की link मेरे चैनल से किसी ने भेज दी है. Oh, nice. I think maybe the admin team has sent you the form also. फॉर्म भी साथ साथ खोल लेता हूँ सो दैट आई डोंट लूज फोकस एंड आई मेक श्योर दैट ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड. बट आई ऑल्सो हैव टू शो यू टूल टुडे विच विल शो यू द मार्केट स्ट्रेंथ. मुझे अंकित को भी भेज देना लिंक ऑफ वेयर आई कैन सी द फॉर्म क्वेश्चंस. वी विल ऑल रिचार्ज एंड रिफ्रेश आफ्टर योर वर्क. ठीक है, तो एक टूल देख लेते हैं. आई थिंक अ टूल इज अवर इंटरनल टूल, बट इट इज़ गुड टू काइंड ऑफ सी द टूल एंड इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द मार्केट पोजिशनिंग. सो मैं आपको एक टूल दिखाता हूँ और टूल का डेमो देता हूँ. सो ये टूल जो कहेगा वो सच के सिवा कुछ और नहीं कहेगा. वी सिंपली मीन दैट दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली proprietary. And I hope you can see my tool. The tool, let me see if it comes on YouTube live. That screen shared is the correct one. यस. सो अगर हम यहाँ पे बास्केट्स देखें, मैं बोलता हूँ निफ्टी 50, निफ्टी 500 देख लेते हैं बिकॉज दैट इज़ वेयर, और निफ्टी टोटल मार्केट देख लेते हैं. निफ्टी टोटल मार्केट देख लेते हैं बिकॉज हमने बोला था कि हम अपने आप को टोटल मार्केट से कंपेयर करते हैं. अगर आप मे बी पूरे एक साल का डेटा देखो, से 23 एंड मे बी 1 तारीख से ले लेते हैं, और आज तक का ले लेते हैं, कल तक का ले लेते हैं, कभी तक का भी ले लेते हैं, से 24 तक मार्केट था.
So you see some kind of graph being plotted right here. I hope you can see that. Now, if you see, this is something, of course, proprietary. This is something which is internal. And by internal, I mean that this is something that we kind of define what is the strength of the market. Now, if you see, this is something called pass ratio. This is something called the date, and we are here from last year to this year. And you see, when I talk about in each of our meetings that market is very weak and in the last quadrant, I simply mean that market is right now at 14% strength. 40% स्ट्रेंथ में पैसे नहीं बनते, राइट? इट इज एज सिंपल एज दैट. मैं स्क्रीन को थोड़ा नीचे ले आता हूँ, या क्योंकि कैमरा यहाँ है तो मैं ऊपर देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है. लेट मी जस्ट काइंड ऑफ शिफ्ट दिस राइट, वन सेकेंड, थोड़ा सा ब्रिंग इट टू अ डिफरेंट स्क्रीन सो दैट आई डोंट सी टू मच ऑन द साइड्स. आई मीन टू मच ऊपर नहीं देखना पड़े. राइट, सो आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ वेरी वेल. मैं एक बार अपने लाइव को इधर ले आता हूँ. I know I should be more prepared in all of these meetings, but I feel like this is real. This is real juggling and struggle of shifting screens and all that. So, chalega. Uh, Let me see if you can see what I see. Yeah. Okay. So if you see market, and if you remember the last, the good days, 65%, right? Your good days of 64%, the December Jans of the world. If you remember the period of July, August, September, when markets and all the baskets were absolutely doing fantastic. You see the kind of market trend the markets was portraying. You of course had a very sharp fall in the month of March, which where all of our baskets had similar falls like they had today because markets went to an 11%, 11% strength. The markets have bottomed out. If you see, nearly 8% in November mid, which was the period of extreme pain, extreme money going out from India. And the whole problem started right somewhere around 7th October. I remember I was traveling. I was planning a long travel, and market started to show weakness around 1st of October. And by 7th October, market went into the last quadrant, which is less than 25%. And after that, market has been in that trajectory for now 2 months, and there is no strength, right? You can always plot this for Nifty 500, right? And say the same dates. So you can see, of course, slightly different variation, but Nifty 500 is kind of placed at around similar 12% strength. Now, the thing I wanted to show you is terms of how sectors does, right, during this period, the entire year. So if you say Nifty IT and compare with say Nifty Metal, I mean, just for our sake of understanding of how do you check correlation between sectors and all that, right? So let me plot this now for last 1 year. So if you plot this now, you see that it is all about finding the right opportunities at the right time. Being in that cycle of market strength. And if you see, if I just say just hide Nifty 500 for a moment and show only IT and metal to you, this color, so I can only call brown, orange, and red. I mean, unlike a lot of female participants who can, of course, I'm sure, tell you the exact color name here. I can only tell some red, maroon, yellow, brown. But these are two different colors, where IT is represented in this color, lighter version of brown, and metal is a version of red. So if you see, uh, this was the period of the golden period when we were in the last year when we started. And if you see this kind of data of December last year, so let's go a little bit back. We started in October, right? So let me go in October. 9 November rather we started. So let's go from 9 November. That will be cleaner to see. So 9 November we launched, I remember. Yeah. Okay. This is from our launch. So market kind of became live after a month of our launch. So 9 December we became public on a small case app. And this is that period of 9 November where we became public, where market had a lot of strength. If you see IT and metals, both were doing extremely great. And there was a period when we could capture metals in our baskets very well, because this entire period from April to the entire period of September, right? This, sorry, July, the entire quarter,
was this period of when metals kind of did extremely well, and you see IT was kind of did not move at all, right? There was a 0% strength in IT sector. When of course tides turn, sectors turn, IT kind of, if you see, came out in that trajectory of August period, and then of course peaked out in August end. Everything started to go down in October. Uh, IT, of course, had some move last month when dollar was continuously kind of increasing, and the company which are export linked, I mean IT service sector export linked, kind of gain benefit. All the large caps of IT, I mean names you're aware. A lot of mid caps we had in our baskets, names you're aware, and you see now, of course, IT also is dropping to nearly what 30% strength. Now, if you can add FMCG to it, you can add maybe what auto to it. You know, a lot of stuff, right? A lot of good stuff. You can add pharma to it, and you can plot them. This is how markets were last year. And if you see, I mean, just to kind of make it cleaner so that you're not worried too much, and there's not a lot of data. If you see, maybe from August, you see how markets kind of lost strength, right? Markets were, of course, that time in August, metal were taking a beating, but there were sectors where you could play the market. You can actually have strategies which are positioned towards that side of the area. There were a lot of strength. I call it above 75%, the highest quadrant, 50 to 70%, 75%, the mid quadrant, where a lot of research comes into action and you find good opportunities. 50 to 25 is something which is very difficult to make, kind of alpha. Less than 25 is anyhow. There's no market, right? There is only you sit on a waiting game, right? That whenever markets move, you kind of come out. So you see, there was opportunities till mid-October maximum, where market has strength, and then market suddenly kind of started to lose strength. Everything came below 50, suddenly had big falls. This market is in complete low strength from last 3 months. I mean, from October, November, December now, and except IT, which was an outlier in between, which helped us to kind of gain some strength in last 2 months and kind of pull back, slight pullback which happened in market. And now compare it with Nifty 50. And compare it with Nifty 50 and see in the last 3 months. Nifty 50 also was on all right strength, kind of broke down below 50 around 7th October. On 9th October, of course, the market came down, and then it went 50% below on 16th October. It ultimately kind of could not sustain. It came to last quadrant in the end of October. And from that time, Nifty 50 also is in the last quadrant, which means whatever pullback you see, which is this green, right? Nifty 50, right? It has not yet kind of crossed the least quadrant, which means there is no strength in the market. That's about 2024. How we did, I think our growth leaders, innovating growth leaders, came out as a winner, along, of course, with value, quality, alpha momentum. All the baskets could beat Nifty Total Market Index, some by very small margin. I mean, baskets like growth leaders, alpha blend, momentum masters by a big margin, and to an extent of 1.5x to 3x as well. Few baskets like prime quality and value investing had a similar kind of returns as the broad market. They did not beat small and mid cap, but they could, of course, beat total market. But all these baskets I refer to, like growth and alpha and momentum, they could beat, all the indices, beat small, mid, large, right, broad. That's more about how we did in terms of last year and how markets did last year. So this tool, you will get a lot of data. You will have access to this tool maybe in some other capacity. We will see. Let me see if any chats are coming. Alpha blend. Okay, what I will can do, Deepak Kumar Panda, I can also add alpha blend as a basket here right now. Alpha blend does not come here. I don't think alpha blend has been added, but alpha blend can be added. This is all. Yeah, gamer guy. I think who is gamer guy? I think is. Let me remind myself. Sharath, if I'm not right, Sharath is asking. Multifactor is continuously falling, even after rebalance. As I explained.
Let's see Nifty. Let's see three things, Sharath. You hold, right? Of course, in 3 months, right? We talked about 3 months. November, October, so October, November, December, right? October, 24th October. Let's see 24th October here. 24th October, 24th December. Okay, let's see your multi-factor. So total market, Nifty 500, निफ्टी 50 भी ले लेते हैं, निफ्टी 500 ले लेते हैं। मार्केट समझ लेते हैं, मार्केट क्या है पिछले 3 महीने में। पिछले 3 महीने मार्केट 14% की ट्रेजेक्ट्री से could never cross 25% trajectory. Nifty, some pullback, I mean, which is still within 25%, but market is back to its strength of around 8% and 12%, and which means, of course, I am sure nothing can be done in these kind of markets. You have to only wait and watch. You have to give it time. It is, of course, at the cost of repetition and may further bore you that all the companies you are a part of are good companies. The rebalance was done to kind of add a correlation. For example, what I just shown you right here is IT, metal, pharma, right? The correlation it exists, right? In terms of less fall. So the rebalance was done after some pullback to give you, kind of give you a buffer that you fall slower and not this sharper, because we are sitting in market of around 12% strength, which means there's no market. Market will only kind of come back to strength when market cross the 25% trajectory and sustain 50%. Yes, is it a good time to add money? Absolutely, it's a great time. Good that 3 months have passed. Good that no money has been kind of generated, no alpha has been generated in 3 months, but people are earning their salaries every month. Good that they are doing their SIPs. Good that they are earning more capital and they don't need this capital which is invested, and therefore they get some buffer every 3 months. Try to add. I will say uh, the bottom of, Nifty 50, you see, there was only kind of 2% company, I mean, which is like one company, right, out of all, which could pass the parameters which we have defined for ourselves, which we call strength of the market. So there was a period when the Nifty had no strength, 7 November, no strength. Nifty tried to gain some strength this entire month, supported by IT, but this strength is not enough. This is again 20, because if you look from a bigger angle of exactly 23 here, right? 23 same date, you see that market has come from a 90% strength. Nifty had 90% strength in the month of December, Jan last year. Only had a fall in March, April time where it came to 40%, right? 40%, not 12%. Again, came back to 80% strength. Again, had a slight fall in June of 40%, still 40%. It's still not in the last quadrant. But when market hit the last quadrant in this month, right, which was 4th October. 4th October is the date when markets kind of took that beating and can only recover, I think, by another quarter. So that's all about it. Now, where do we see 25, right? I mean, of course, you see last year, December, January, we were exactly sitting here. Markets were one way. We launched in November. We went live in December on app. We became number one small case by 1 month return also, because of course we were new, we were concentrated, we were playing this strength in the market. All strategies of course outperformed, because that is how the strategies are. They are all kind of statistics driven strategies. uh, Here we are in this December, market is completely turned. Last December is a 90% strength in Nifty 50. This December is a 10% strength in Nifty 50, which explains, right, what is the current state. Two sides of the coin. Markets are absolutely reverse of what was in December last year. If I had to launch small case last year, this year it would have been new, it would have been very difficult. But the positive side is people who are joining now, every month, all new brokers, big brokers in the country, adding new demat accounts. Demat accounts are exponentially increasing, which simply mean that new guys, new members
Right, I was in IT Kanpur, as I mentioned, right, last 2 days, and I was meeting professors and students and all that. The whole point is, it was not the case that students invest in equity markets. Now, third year students, fourth year students, pocket money student, they are starting the investment journey, uh, and they are part of the ecosystem. They are using small case app. They of course have their broker accounts. They all are above the eligible age to invest, which simply mean that they have a valid PAN card and all of that, right? And therefore, since the market participation increasing at this rate, is absolutely a very, very sweet moment where people who were a part of market at 92% strength on 19 December last year, and if I actually date 20 27 26 December, 84% of the companies of Nifty 50, which means 40 companies and 50 companies were very strong, right, last December in terms of their strength, right? Technical strength, you call it, in terms of results, in terms of a lot of parameters we deploy in the background. From 84% to 26 December today. I mean, today data तो शाम को compute होगा, तो I can tell you market day जब close हुआ था 24th को, 8% company. So we have come from 84 to 8 in 1 year, which is all right. A lot of people have, I mean, as I said, Nifty had given a good single digit return. Nifty total market has given a good two digit, like a double of what Nifty 50 has given in last 1 year from Jan to December. As I said, our baskets have performed from 1x. None of the basket could not beat the index. All baskets could beat the broad index. All baskets could beat the broader index. Few baskets could not beat small and mid, but three, four prime baskets like growth leaders, alpha blend, momentum masters could beat all all segments of the of the markets. That is where the active management of and active portfolios, active model portfolios, like the baskets, small cases may work. And this is another cycle. Heartbeat goes ups and down. I mean, it goes up and down, up and down. There's never a straight line. And what I was trying to explain, IT and metal example, which people who join, I see a lot of people join late. So I was trying to show with the IT and metal example what we IT and metal. Sorry, guys. Slow, right? I'm usually slow. See, right, how Nifty and metal had a good correlation, negative correlation between them. When markets are in crazy bull phase, everything is in bull phase, right? IT, metal, all. But when markets kind of show signs of cyclicality nature, then you see that IT and 3 months, no movement, all downside move, metals, great strength. It reversed. IT great strength, metals, no move, right? Similarly, we as a research house has a responsibility, has a job to keep track of all this and make sure that we keep rebalancing, keep bringing you fresh out of the oven. And अमित भाई बोल रहे हैं, जय श्री राम रॉबिन सर, माई 1-to-1 मीट इज शेड्यूल टुडे विद यू एट 4. प्लीज डोंट मिस, आई नो यू आर वेरी बिजी. ओके, नहीं मिस करेंगे, अगर आपने बोला है तो बिल्कुल आएंगे. चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे. आई होप ये आपको जो मैंने दिखाया ये अच्छा लगा हो, इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउ वी आर ट्रैकिंग मार्केट्स. और आई थिंक मैंने अमित के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हूँ इसी वाले इस डायग्राम दिखा के. नहीं तो मैं दोबारा से दिखा दूंगा शाम को. देखते हैं किसी ने क्वेश्चंस पूछे हैं क्या. सबसे अच्छी बात है कि मैं आज तक 500 से ऊपर क्वेश्चन आंसर कर चुका हूँ, 500 एंड मोर, विच इज़ ग्रेट. मोहम्मद अकदम पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू रीबैलेंस or average these stocks based on invested value instead of current value? Because every time I put in money, I'm averaging lose making stock instead of outperformance. नहीं, थोड़ा सा लॉजिक है इसके पीछे मोहम्मद अकदम भाई. लॉजिक है, स्मॉल केस will try to bring your basket in the same weightage as we have prescribed. Now companies which have moved higher, or say flat, they might be as at the same weightage as we have given, right? 10%. But companies which have gone lower in price would may have a reduced weightage in your basket, say 8%.
So just to bring that 8 to 10, it will buy those companies, right? That is how the small case logic works. Of course, the decision is in your hand. You are the owner, you are the executor. You can customize it the way you like. So वो पूरा आपके पास वो है. Sumant Bhuj sir, can you suggest me one of your small case where less frequency rebalance which can beat large mid mutual fund refunds? Okay, returns. ऐसा नहीं है. मैं आपको आई डू नॉट नो कि कौन क्या करेगा. ओवरऑल लॉन्ग टर्म में सब अच्छा करेंगे. आपने हम लास्ट ईयर की मैंने आपको अभी रैपअप बताया सुमन जी. यू हैव टू ओनली सी दैट लेस रीबैलेंस का मतलब होता है नीड बेसिस रीबैलेंस. और नीड बेसिस रीबैलेंस में हमारे पास तीन बास्केट्स हैं. एक है अल्फा मोमेंटम फ्यूजन विच इज ऑन N500 यूनिवर्स. एक है मल्टी फैक्टर विच इज ऑन N750 यूनिवर्स. एक है वेल्थ वेव्स विच इज अ थीम बेस्ड बास्केट ऑन रिस्क ऑन वेल्थ मैनेजमेंट एंड AMC एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस. उन तीनों में आप चूज कर सकते हो. आई थिंक उन तीनों में दो का तो वीडियो है डिटेल्ड ऑन यूट्यूब जो हम आपको भेज देंगे. अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पिंग करोगे हम आपको वो लिंक भेज देंगे. हमने पूरा वीडियो डिटेल में बनाया है क्या प्रोसेस है क्या क्या करते हैं. और जो तीसरे का नहीं है वीडियो विच इज आई थिंक तीनों का है. अल्फा मोमेंटम फ्यूजन का भी है. अगर आप जाओगे ऐप में तो देखोगे एक छोटा सा आइकन आएगा मेरा मेरा थंबनेल बना हुआ मेरा फेस बना हुआ. क्लिक करोगे तो वीडियो खुल जाएगा. तो मैंने मोहम्मद जी आपका आंसर दिया. अतुल बोल रहे हैं व्हेन विल द मार्केट रीगेन स्ट्रेंथ एंड व्हेन इट मूव अपवर्ड्स व्हेन विल आवर स्मॉल केस बिकम पॉजिटिव हाउ मच टाइम इट विल टेक. अतुल बोल रहे हैं मार्केट में लग रहा है कि ओवरऑल क्योंकि यूएस का भी अब स्टार्ट होने वाला है राइट नया टेन्योर. और आरबीआई को भी डिसीजंस लेने बजट आने वाला है. मुझे लग रहा है कि मार्केट में रियल स्ट्रेंथ जो हमने अभी देखा था लुक्स लाइक यू आर नॉट फीलिंग गुड टुडे. मैं ना मेरी लास्ट वेंचर तबीयत खराब है. मैं ट्रैवल भी कराया कोल्ड में और ठंड भी खा ली कानपुर की. अच्छी ठंड थी मज़ा आया कैंपस की ठंड में. लेकिन कोल्ड नहीं ठीक हो रहा. वो पता नहीं कैसे ठीक हो गया. 1 वीक तो हो गया. तो ये थोड़ा सा आवाज़ पिछले वेंचर मैंने यही एक्सक्यूज़ दिया था ना आवाज़ अच्छी नहीं है. आवाज़ अच्छी नहीं चल रही है. सो मार्केट ना मुझे लगता है अतुल जी मार्केट में ओवर 2 क्वार्टर्स में स्ट्रेंथ आएगी. आई थिंक क्वार्टर जो हमारा Q4 लास्ट ईयर था ना हमें मुझे काफ़ी लगता है कि अगले साल का दिसंबर हम फिर से वही अपसाइड देख रहे होंगे जो हम आज देख रहे हैं थे पिछले साल का देख रहे थे राइट पिछले दिसंबर का. ये पूरी साइकिल पूरी ऐसे ही घूमेगी. उसी जर्नी में हमें क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ दिखेगी. Q2 के रिजल्ट्स बहुत खराब आए थे. आई थिंक मैंने सभी कहा था कि आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड. नंबर्स आगे अच्छे आएंगे. मैं अभी इवेंट्स अटेंड किया हैदराबाद में शादी में गया इवेंट में गया पार्टी है ड्रिंक्स है गुड फूड है विच मीन्स कंजम्पशन बढ़ रहा है राइट. खूब खर्चा हुआ होगा. खूब सामान खरीदा गया होगा. बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हुए होंगे शादियों में विच मीन्स कंजम्पशन बढ़ रहा है. लोगों के हाथ में और पैसा आ रहा है तो खर्च करेंगे लोग. लोगों में लोग जाड़ों में अच्छा अच्छा खा पी रहे होंगे नए कपड़े खरीद रहे होंगे. सीजन ही ऐसा राइट फेस्टिवल्स हैं. तो कंजम्पशन नंबर्स अच्छे आएंगे. नंबर्स अच्छे आएंगे तो ऑटोमेटिकली ना हमारा जीडीपी ग्रो करेगा. जीडीपी ग्रो करेगा तो हम भी ग्रो करेंगे. सो 2 क्वार्टर मान के चलिए. दीपक पूछते हैं व्हाट इज योर प्लानिंग पर्टेनिंग टू ह्यूज लॉस मेकिंग स्टॉक्स अल्फा प्लान. दीपक जी पहले भी बताया है फिर से बता रहा हूँ. ये मॉडल पोर्टफोलियो है. ये इंडिविजुअल रिसर्च सर्विस नहीं है. शायद हम लॉन्च करेंगे अपनी ऐप पे कभी ना कभी. ये बास्केट है. बास्केट में इंडिविजुअल कंपनीज को हम ट्रैक करते हैं यू आर राइट. बट उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते एक कंपनी के ऊपर 2 कंपनी के ऊपर. वो एज अ 10 12 14 कंपनीज उनको ओवरऑल देखते हैं. तो जब आप अपनी लॉस मेकिंग कंपनी को ध्यान देते हो आप अपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पे भी ध्यान दीजिए. क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल बास्केट की स्ट्रेंथ को कंट्रोल रखना. इतना मार्केट वीक है उसमें अपनी बास्केट को किस तरीके से मेंटेन किया जाए कि कोरिलेशन. मैंने आपको भी कोरिलेशन का एग्जांपल दिखाया ना. मैं हर बार आपको दिखा नहीं पाता था वो एग्जांपल. मैंने इस बार आपको एग्जांपल दिखाया वो कोरिलेशन का कि किस तरीके से हम वो साइक्लिकलिटी नेचर ऑफ द मार्केट को. और मल्टी फैक्टर अगर आप पढ़ोगे ना अगर आप थ्योरी पढ़ोगे या रियल देखोगे पिछले 50 साल का देखोगे यूएस मार्केट देखोगे तो जो साइक्लिकलिटी नेचर होता है मार्केट का वही इट टेक्स इट आउट राइट. दैट इज वेयर द मल्टी फैक्टर पावर कम्स इन. ठीक है ना. तो शरद पूछ रहे हैं डू यू एन एनी प्लान्स टू क्रिएट नीड बेसिस मॉर्गेज इन फ्यूचर. सर अभी तो बनाए हैं 3.
अभी तो है, आई मीन तीन शेयर बिटवीन मल्टी फैक्टर एंड अल्फा फ्यूजन विच इज राइट स्मॉल केस फॉर यूजर हु वांट टू लेस रिबैलेंस एंड 2-3 ईयर विजन। मल्टी फैक्टर अल्फा फ्यूजन, देखिए अल्फा फ्यूजन कुड बी इन थ्योरी, ऑफ कोर्स वो एक टाइम के बाद रियलाइज होता है 1 ईयर 2 ईयर पीरियड पे, इन थ्योरी will be less volatile. I mean, it has a balance because it is within N 500 companies, but multi-factor is within N 750 companies. So वहाँ पे अल्फा फ्यूजन को एक वो मिल जाता है ना, थोड़ा सा लार्ज लार्ज, मतलब एक कंपेरेटिवली लार्ज आ जाती हैं कंपनीज वहाँ पे, बहुत छोटी कंपनी नहीं आती, मल्टी में बहुत छोटी कंपनी आ सकती हैं। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हम एक वैल्यू या क्वालिटी जैसे फैक्टर को यूज करते हैं मल्टी फैक्टर में, जिससे कि वो जो छोटी कंपनी भी आए वो बैलेंस शीट वाइज बहुत स्ट्रांग हो। सो मुझे लगता है दोनों ही सिमिलर रहेंगे आगे जाके, लेकिन ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे लगता है लोगों को अल्फा मोमेंटम फ्यूजन में होता है, क्योंकि वहाँ पे अल्फा एंड मोमेंटम को प्राइम फोकस दिया जाता है। तो शायद उन्हें जो कंपनीज दिखती हैं वो उनमें काफ़ी मोमेंटम अल्फा इमीडिएट होता है, आई थिंक शायद वो एक फैक्टर हो सकता है। आपको क्या चूज करना चाहिए? रीबैलेंस दोनों में सेम होगा और 2-3 साल में सब बराबर हो जाता है। सो जस्ट चूज बेसिस योर प्रेफरेंस कि आप N 500 में इन्वेस्ट करना चाहते हो अपना पैसा, या N 750 के लिए कंफर्टेबल हो, छोटी बहुत छोटी कंपनी के लिए भी कंफर्टेबल हो। अ, प्रशांता पूछ रहे हैं, अच्छा प्रशांता शायद वही हैं जो मुझसे मिलना चाहते थे कानपुर में, बट आई थिंक हमारे डेट ओवरलैप हो गई। वो चले गए अपने गांव, फिर बोले मैं कल आ रहा हूँ, और वो मुझसे आज मिलना चाहते थे कानपुर में, आज था नहीं। मे बी माई क्वेश्चन लॉन्ग, आई वांट टू आस्क दीज थिंग्स पर्सनली about my journey, how tech and path of wealth management for you, which incidents, people who impacted you on your journey, what are the key lessons you learned from your journey, people, या I mean आप बुक कर लो ना 1-to-1, आप अगर बोल दीजिए हमारी टीम को कि मेरे साथ एक 1-to-1 लगाएंगे तो हम बातें करेंगे आराम से बैठ के। संतोष पूछ रहे हैं, मेरी क्रिसमस सर, मैं अल्फा फ्यूजन का सब्सक्राइबर हूँ सर, आपकी सारी स्मॉल केस बास्केट एक मिनिमम डिसेंट लमसम अमाउंट कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, प्लीज़ प्लीज कहाँ लिखा है बता, ये उसके हिसाब से अमाउंट डाल के हम एसआईपी करते रहेंगे। सर मेरा 9 ईयर का डॉटर का डीमेट अकाउंट के लिए प्रोसीजर क्या है, क्योंकि मैं उसके लिए अपकमिंग ईटीएफ बास्केट लेना चाहता हूँ। सर आपका फेवरेट बास्केट कौन सा है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सा बास्केट चूज करते हैं? 9 ईयर डॉटर के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम खोलिए, मेरी बेटी का भी है, मेरी दो बेटियां हैं। छोटी बेटी का भी खोला नहीं है, आलस है, एंड मोर देन आलस, ही इज जस्ट 2.5, सो टाइम नहीं मिला, 2.5 में बहुत बिजी हूँ। पर 1 ईयर, लाइक द एल्डर वन इज 10 ईयर्स, नियरली 10, आई मीन रनिंग 10, सो उसका सुकन्या मैंने फर्स्ट ईयर में खोल लिया था। तो ओपन सुकन्या समृद्धि स्कीम, फैंटास्टिक स्कीम, ट्रिपल इंस्ट्रूमेंट, टैक्स फ्री, 14 साल आप डिपॉजिट कर पाओगे। 14 और 7 साल बाद आप उसे जब मैच्योर करोगे, जब वो 21 साल की होगी तो पैसा डबल हो चुका होगा, 14 साल में आपने जमा किया होगा। वेरी सेफ इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट बैक्ड, ग्रेट थिंग, ग्रेट वे राइट टू स्टार्ट। डीमेट अकाउंट आई डोंट थिंक खुलता है छोटे बच्चों का, मुझे नहीं मालूम खुलता है, यू हैव टू चेक विद योर ब्रोकर, आई डोंट थिंक खुलता है। बट हाँ, सुकन्या स्कीम खोली अपनी बेटी के लिए, दैट इज़ फन। आई मीन पर्सनल फाइनेंस एडवाइस नहीं देना चाहता आपको, आप एक एडवाइजर से बात करिए, बट मैं आपको एक एज अ फादर बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। दूसरा बात, मेरा बास्केट कौन सा फेवरेट है, वही बात हो गई, दो बेटियां हैं कौन सी फेवरेट है, दो बच्चे हैं कौन से फेवरेट है, ऐसे तो नहीं होता ना, सारे बच्चे हैं सारे फेवरेट है। हाँ मूड होता है, कभी अलग अलग मूड होता है मेरा, whoever will kind of show me less drawdown, I will be happy, which means जो मुझे कम डिसअपॉइंट करते हैं बच्चा कि भाई कम मुझे चिल्लाना पड़े, तो मैं हैप्पी रहता हूँ, मोमेंट्री होता है वो। लेकिन मैंने इस उम्र में दूसरे को भी करना पड़ता है, जिसके ज़्यादा टेंट्रम्स होते हैं, अल्फा ब्लेंड के ज़्यादा टेंट्रम अगर होंगे कि वो बहुत वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई काइंड ऑफ मेक अल्फा ब्लेंड and kind of give my right guidance and create a framework for alpha blend that it is rightly balanced। So जो भी बच्चा मेरा ज़्यादा शैतानी करता है या वो करता है, नॉटी होगा, उसके हिसाब से उसको मैनेज करूंगा। कौन सा फेवरेट आप इन्वेस्ट करते तो किस में करते? मैं तो भाई सब में करता, मेरा अपना मेरे बच्चे हैं तो सब में इन्वेस्ट करता है, मैं कोई प्रेफरेंस नहीं देता, मैं सब में इन्वेस्ट कर देता। प्रिया Bertha पूछ रही है, considering the recent downfall in the portfolio stocks of growth leader, including both new entrant and old one, is a good buy to top up or should I wait? I think you can top up, कुछ ऐसा rebalance आना नहीं है अभी।
प्रिया जी, प्रिया बोलता हूँ मैं आपका नाम, मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में टफ है, प्रिया प्रता, बट इफ यू वांट आई मीन इफ यू आर ओके आई कैन कॉल प्रिया। सुधा रावत पूछ रहे हैं या रही हैं, इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ लीडर्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल राइट टाइम। धीरज पूछ रहे हैं, सर आप म्यूचुअल फंड कब शुरू करने वाले हैं, व्हेन इज द म्यूचुअल फंड स्टार्ट? देखिए दो पार्ट हैं इसके। हम म्यूचुअल फंड, हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है, मैं मैनेज नहीं करता, हमारी टीम है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करती है इन टर्म्स ऑफ वी आर एमफी सेबी एमफी लाइसेंस होल्डर। सो अगर आप हमारे थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप हमसे बात कर सकते हैं, करिए। हम अपना म्यूचुअल फंड कब स्टार्ट करेंगे उसकी जर्नी बहुत लंबी है। आई थिंक माई डॉटर विल बी इन कॉलेज व्हेन आई विल एबल टू स्टार्ट, क्योंकि उसकी जर्नी 8-10 साल की होती है। हम एक एक करके लाइसेंस लेंगे और फिर अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेंगे। नका मलेश पूछ रहे हैं, सिंस मैनी मंथ्स अल्फा ब्लेंड पोर्टफोलियो नॉट मूव टू पॉजिटिव, मैं लाइव हूँ 2 मिनट रुक जाइए, still sitting on some percentage loss, and also last rebalance you booked some X loss by adding new stocks and sold stock which are already in losses. Please let me know how much time it will take to turn my portfolio positive and loss recover. 6 महीने लगेंगे नागामलेश जी, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो सर्टेनली, पर ऐसा लगता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट की कहाँ से स्ट्रेंथ जा रही है। दीपक पांडा पूछ रहे हैं, उन्होंने लिखा है वाई इज अल्फा ब्लेंड पोर्टफोलियो, मैं इसका समझ नहीं पा रहा हूँ। सतीश पूछ रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद ज्योति लैब? ओह सॉरी मैंने नाम ले दिया, ओह आई हैव टू एडिट द वीडियो, इग्नोर माय क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज रॉन्ग विद एक्स एक्स एक्स? ठीक है। रवि रंजन पूछ रहे हैं, आई एम लुकिंग टू इन्वेस्ट एक्स अमाउंट इन वन ऑफ द गोल्फी स्मॉल केस एंड दैट कैन बी इंक्रीज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ओके, कैन यू हेल्प मी इन दिस? बोलिए आपको क्या हेल्प चाहिए। हमारे सारे स्मॉल केसेस के यूजुअली वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, हमने उसकी स्ट्रेटजी भी बता रखी है। आपको और क्वेश्चंस हो आप हमारी टीम को पिंग करिए, आपको वीडियोस भेज देंगे। अगर आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं आएगा तो मैं आपसे बात कर लूँगा। संजय पूछ रहे हैं क्या रीबैलेंस हो रहा है? नहीं, रीबैलेंस अभी नहीं हो रहा है कुछ। कैन आई हैव अ डिस्काउंट कूपन टू कंटिन्यू दिस स्मॉल केस अल्फा ब्लेंड? ड्यू टू करेक्शन आई एम स्टिल इन नेगेटिव, सो आई वांट, सो आई विल अप्रिशिएट एनी डिस्काउंट। थोड़ा मेरे से बियॉन्ड है ये, मेरा मेरा कंट्रोल नहीं रहता इन चीज़ों पे। आप मेरी टीम को पिंग करिए, आई एम श्योर आपके लिए अच्छा करेंगे। सुषमा पूछ रहे हैं, कुमारी पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं, व्हेन यू एडेड दीज 3 कंपनीज इन दिस एंड दे वर रिप्लेस बाय समथिंग, द स्टॉक विच आर डूइंग रिप्लेस आर डूइंग बेटर। देखो ये तो हर घर की कहानी है, हर साल का हर रिबैलेंस का दुख है जो आपको बार बार मिलेगा, कि जो हमारे पास है वो अच्छा नहीं है, जो हमारे पास था वो अच्छा था, या जो हमारे पास कभी नहीं था वो अच्छा था। ये जर्नी 6-8-10 महीने में रीबैलेंस जब होता है कई बार तब जाके स्ट्रीमलाइन होती है, तब तक ये दुख बार बार आता है। हाँ तो पीवीएस राजू वट मार्केट 2025 मैं उसी में ले लेता हूँ। आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन मैं नहीं ले पाऊंगा बिकॉज ऑफ द टाइम। क्या था, हाँ 25 की बात करें, 25 में आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई थिंक मैंने बोला वेल्थ वेव जो हमने लॉन्च किया, विच वॉज अ वेरी राइट काइंड ऑफ strategy to have a complementary product which can go with your base strategy। और अगर आप देखो वेल्थ वेव काइंड ऑफ कंपनीज राइट विच आर, सी इवन आज का मार्केट देखिए, आज के मार्केट में आप वेल्थ वेव की कंपनीज जिनके पास वेल्थ वेव है, जिनके पास अंडरस्टैंडिंग है कैपिटल मार्केट्स की, अगर आप देखो कि दो बड़े हाउसेस क्या हैं इंडिया में, जो आधे म्यूचुअल फंड्स को एक संभालता है, आधे म्यूचुअल फंड को एक संभालता है। और देखो आज का मूव देखिए इस मार्केट में, आज का कल का उन कंपनीज के मूव देखिए, हाउ दैट इकोसिस्टम इज ग्रोइंग, एंड देयरफॉर दैट वेल्थ वे बिकम्स अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। ओनली रीजन बीइंग दैट सेक्टर हैज अ लॉट ऑफ टेलविंड। जब तक सेक्टर में टेलविंड नहीं आता ना, टेलविंड का मतलब होता है कि एक पीछे से एक पुश मिल रहा है ना, कहते हैं प्लेन उड़ रहा है तो हेडविंड होती है, तो हेडविंड अगर बहुत तेज हवाएं चल रही है, हेडविंड है तो ऐसे ऐसे करके आपको वो करना होता है। इट आई मीन यू हैव लॉट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट में होता है टर्बुलेंस। सो जब टेलविंड होती है देन यू हैव दैट, हवा आपकी डायरेक्शन में चल रही है, हवा आपके डायरेक्शन में चल रही है, देन दैट 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 एंटायर मूवमेंट ऑफ डीआई मनी, द एंटायर मूवमेंट ऑफ एफआई मनी मूव्स इनटू दैट डायरेक्शन। और मैंने आपको वो एक कोरिलेशन का एग्जांपल दिखाया अभी, जहाँ पे हम दिखाया कि कैसे वो सेक्टरल टर्न होते हैं, आईटी मूव होता है, मेटल मूव होता है, and वही हम कैप्चर करते हैं, दैट इज व्हाट वी डू।
ये जो बीच में फोटो बैकग्राउंड में वो आपका है? हाँ, वो मेरा है। एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमारी 1 ईयर एनिवर्सरी पे भेजा था। उसमें लिखा हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि अगर बुल मार्केट है, जो अब दिखाया लास्ट दिसंबर का मैंने, ट्रस्ट द प्रोसेस, और बियर मार्केट है तो ट्रस्ट द एबिलिटी। तो कहीं ना कहीं जो ये बीच वाले इंसान है, जो शायद मैं ही, मतलब जो मैं ही हूँ, कहीं ना कहीं आपको प्रोसेस, एबिलिटी और पेशेंस तीनों चीज़ें दिखानी होंगी, तभी शायद हम लंबा साथ में टिकेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इज एनी ओपनिंग इन टेक रोल इन गोल्फी? प्लीज लेट मी नो, ऑल्सो इन्वेस्ट इन अल्फा मिनट फ्यूजन। गोल्फी में जब तक आप कैपिटल एफ नहीं लिखोगे, हम आपका रिज्यूम रिजेक्ट कर देंगे। गोल्फी में छोटा एफ अलाउड नहीं है हमारे यहाँ। गोल्फी में आपको हमेशा GOL और FI में एफ बड़ा लिखना है, क्योंकि गोल्फी आर टू वर्ड्स कंबाइंड, राइट? So Golfi, of course, please, yeah, it's representing whole community. Absolutely, Rohit. It's on your behalf. I mean, all of you. I'm sure it's a gift from all of you. So मजाक था सौरभ. Yes, there are tech openings in Golfi. कोई- but please, when you write F as uppercase, and आप अपना ईमेल भेज सकते हैं, हायरिंग, HIRING, hiring@golfi.app ईमेल पे। हम एब्सोल्युटली उसको कंसिडर करेंगे। और वो हमारे पास ओपनिंग्स हैं, रोल्स हैं। आर यू प्लानिंग अल्ट्रा मोमेंटम स्टॉक्स बास्केट रीबैलेंस? नहीं, हम लोग राहुल रीबैलेंस की बास्केट, सॉरी बास्केट तो नहीं प्लान कर रहे हैं, बट हम लोग अपनी ऐप पे बहुत काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी रिसर्च एडवाइजरी लॉन्च करेंगे, आज नहीं तो कल, बहुत जल्दी। वहाँ पे एज इन व्हेन, I mean, of course, there will be a lot of strategy which will be deployed, and people who are active members of the market, who are actually looking into opportunities, they will be subscribing to that service, and of course they will get access to the research advisory as and when it is published। अगर वो 12 बजे पब्लिश होगी दोपहर के, तो 12 बजे आपको ऐप में सब में मिलेगी, along with the rationale and research report, and you can take the action at your end yourself। बट बास्केट तो नहीं लॉन्च करेंगे, वो एग्जीक्यूशन फिर आपके हाथ में होगा। चलिए, बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया 45 मिनट्स बात करके, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। सर, टेक्निकल बेस पे स्टॉक चूज करते, मुझे एकदम याद आया, ऊपर भी आया क्वेश्चन था कि आप टेक्निकल या फंडामेंटल। मैंने ना पिछले वीक गोल्फी का एक स्टार्ट फ्रेमवर्क करके बनाया है, START, उसका एक डेमो दिया था, बहुत अच्छा, 40 मिनट्स का। वो वीडियो स्मॉल केस के ऐप पे मैनेजर अपडेट सेक्शन में है। व्हाट इज स्टार्ट फ्रेमवर्क फॉर गोल्फी, उसमें हर स्टेज में दिखाया गया है कि कहाँ फंडामेंटल, कहाँ टेक्निकल, कहाँ मैथमेटिक्स, कहाँ अप्लाई होती है, कैसे एक 700 750 कंपनी का यूनिवर्स एक 30 कंपनी पे तक पहुंचता है। वो आपको हमने समझाया है उस वीडियो में। तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टार्ट फ्रेमवर्क ऑफ गोल्फी विद अपर केस एफ। ठीक। चलिए, मजा आया गाइस, एंड मेरी क्रिसमस, होप यू हैड लवली yesterday, and happy new year. Of course, we'll meet on the new year. It is Wednesday again. I will be, I think, off in the first half for sure, because 31st की पार्टी में I'm sure लेट हो जाएगा, तो फर्स्ट हाफ छुट्टी लेंगे, बट सेकेंड हाफ वर्क करेंगे टू टू मीट यू। एंड छुट्टी मैं इसलिए नहीं लेता फर्स्ट की, क्योंकि अगर पहले दिन ही काम नहीं करूँगा तो पूरे साल काम नहीं कर पाऊंगा, तो आई हैव टू वर्क ऑन फर्स्ट टू मेक श्योर दैट आई वर्क द एंटायर ईयर। बट या, हाफ डे छुट्टी, हाफ डे वर्क इज द प्लान फॉर फर्स्ट, बट आई विल मीट यू इन एनी हाउ, आई विल मीट इन द सैटरडे टू आवर सब्सक्राइबर्स। स्पीक टू यू गाइस, एंड स्पीक सून, टेक केयर। वैसे भी सैटरडे चाय पे चर्चा वाला वीक है, वही लोग ज्वाइन करेगा जिन्हें सिर्फ गप करनी है और कुछ नहीं करना, काम की बात नहीं करनी।